SVM Sitamarhi, Class 9, Subject Physics. Contents are written. Chapter 8, Motion. Topic, Velocity Time Graph. Good morning भैया and बहन. Welcome to SVM Physics class. Class 9, Subject Physics. Chapter 8, Motion. Part 8. Topic, Velocity Time Graph. Yes, Velocity Time Graph. Velocity Time Graph में हम लोग डिफरेंट 5 ग्राफ पढ़ेंगे, 5 ग्राफ से फर्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी. वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. Constant velocity means what? That is acceleration equal to 0. No acceleration. Constant velocity or uniform velocity. For example, 5 meter per second. The velocity of body forever in time 0 seconds. 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second, and so on. It means a body travels by constant velocity, that is uniform velocity. Here, velocity time graph, velocity plot on y-axis and time plot on x-axis. So constant velocity means no acceleration. Constant velocity means no acceleration. No acceleration. That is acceleration equal to 0. For example, a body having constant velocity a body having constant velocity v equal to 5 meter per second. Five meter per second. Please mind it, no acceleration, that is a equal to 0. A body having constant velocity v equal to 5 meter per second. So in tabular form, we write time t, velocity in meter per second, in second. 0 second, 5 meter per second. After 1 second, also 5 meter per second. After 2 second, 5 meter per second. After 3 second, 5 meter per second. After 4 second, 5 meter per second. In all cases, the velocity of the body is 5 meter per second. That is constant velocity, means uniform velocity. Then we find graph, velocity time graph for a body moving with constant velocity. Constant velocity means what? Uniform velocity. So graph plot velocity time 1, 2,
3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Here we meter per second. Okay, timing second. So 0 for 5, 1 for also 5, 2 for 5, 3 for 5, 4, 5, 5 for 5. So that is graph will be a straight line. Okay, graph will be a straight line parallel to time axis. Graph will be a straight line parallel to time axis. Okay, parallel to time axis. Then we draw one perpendicular turn from this. Okay, so after 4 seconds from this shaded part we find displacement. Means under this graph we find displacement, also find acceleration. From graph we find acceleration. In which way? Mind it. Here T1, T2. Okay, so here U and C. From graph we have U equal to V equal to 5 meter per second and T1 equal to 0 second, T2 equal to 4 second. Yes, 4 second. Then we find acceleration equal to, suppose that here A, B, C, O, A, B, C means here acceleration equal to V2 V minus U by T2 minus T1. Acceleration equal to V minus U by T2 minus T1. V here 5 minus 5. T2 means 4 minus 1, 0. Means 0 by 4, that is A equal to 0 meter per second square. Okay? Means acceleration find this by this. Okay, magnitude of displacement, that is velocity time graph under we find magnitude of displacement. So here area of rectangle OABC, that is area of rectangle OABC gives us magnitude of displacement. Please mind it, meter per second and here second. Meter per second multiplied by seconds. So we have area of triangle OABC gives us magnitude of displacement. Okay, magnitude of displacement. तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एरिया निकालेंगे. नो, तो एरिया मीन्स यहाँ अगर निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड शो हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर velocity time graph. Area under velocity time graph. So length into breadth. So length here OC into BC. No, OC having 4 into here 4 seconds into 5 meter per second. That is 20 meter and
So velocity time graph, acceleration find and magnitude of displacement. So here velocity time graph for a body moving with constant velocity. Velocity time graph for a body moving with constant velocity. We find acceleration and magnitude of displacement. Magnitude of displacement, area under velocity time graph. Here OABC is rectangle. You know area of rectangle, length into breadth. OC just OC arms and BC arms, but actual OC arms having time, so time having its proper unit, and BC velocity, so velocity its proper unit meter per second, so seconds cancel, so 20 meter magnitude of displacement. Okay, then velocity time graph फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में दो तरह का हम लोग पढ़ेंगे। अभी यहाँ देखते हैं दो तरह का ग्राफ। व्हेन इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, सेकेंड में व्हेन इनिशियली बॉडी इज नॉट एट रेस्ट। इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, इट मीन्स व्हाट, एट t1 equal to 0, then velocity is 0. t2 equal to 1 second, velocity is also here t2 equal to 1 second, then velocity becomes 5 meter per second. t3 equal to 2 second, means v3 equal to 10 meter per second. No, so then here t1 0, v1 0, t2 0, t2 1 second, v2 5 meter per second, t3 2 second, v3 10 meter per second. So a great change, constant amount. That means velocity changes with a constant amount, 5 meter, 5 meter, 5 meter per second changes 5 meter per second. So here two information here about slope and area. Okay, slope and area, slope and area, slope and area gives information. First, slope gives us acceleration. Means what? A equal to, suppose that if we take here AM, so AM by OM perpendicular by base, P for perpendicular, B for base, perpendicular by base. And second position here, the magnitude of displacement. Magnitude of displacement means कि area under velocity time graph. Here also we find area under velocity time graph. This area gives us displacement. और ये slope gives us acceleration. No, acceleration. This acceleration gives us लोगो ये slope, this slope here gives us acceleration area. But here initially if t1 equal to 0 and v1 equal to 2 meter per second, that means कि initially is not at rest. Here 2 meter per second. Two types here graph uniform accelerated motion में, but here also conclusion, same conclusion.
slope. Here also A equal to slope of AB line, and displacement equal to area of trapezium, OABM, area of trapezium OABM. Means these types of information gives us about two graph when initially the body is at rest, when initially the body is not at rest. So not at rest means this graph, initially at rest this graph. Velocity time graph when the velocity of the body decreases uniformly to zero. इसका ग्राफ देखिए कैसे कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीज यूनिफॉर्मली टू जीरो, यूनिफॉर्मली रेट से जीरो जाता, उसका लास्ट फाइनल वेलोसिटी हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी इट मींस नॉन जीरो, समथिंग डिक्रीजेज. सो वी राइट हियर ग्राफ दिस फॉर्म, दिस टाइप्स ग्राफ्स. ओके, वेलोसिटी टाइम second meter per second, 2, 4, 6, 8, 10. Here 1, 2, 3, 4, 5. That means at first let us consider कि velocity of the body is 10 meter per second. After some time, 5 seconds, after 5 seconds, velocity 0 meter per second. That means here v equal to 10 meter per second, here v equal to 0 meter per second. Last we find velocity time graph, velocity time graph for non-uniform acceleration. किस टाइप से ग्राफ, non-uniform acceleration. वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर non-uniform acceleration में हम लोग देखते हैं कैसा मिलता है. इसमें ग्राफ सिंपल हम लोगों को मिलेगा. सो आपको देखिए ऐसा ग्राफ मिलेगा, v here meter per second, this time second x axis, y axis means 2, 6, 8, 10. So here this type of graph. Okay, that means कि non-uniform axis, this slope, this non-uniform acceleration graph here. So we learned different types of graph: velocity time graph, uniformly accelerated motion, and uniform velocity, that is constant velocity graph, non-uniform accelerated graph we find. Please mind it. Here velocity time graph से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है. द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन असेंडिंग पैसेंजर लिफ्ट. ये असेंडिंग पैसेंजर लिफ्ट है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये सेकेंड में, ये आपका मीटर पर सेकेंड में. तो शोन इन फिगर, लिफ्ट शोन इन फिगर, व्हाट इज द एक्सेलरेशन. सिर्फ एक्सेलरेशन यहाँ निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो आप निकाल लेंगे आराम से. एक एग्जांपल देखते हैं. फर्स्ट 2 सेकेंड देखो, 1, 2, फर्स्ट 2 सेकेंड में कितना एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है. अब लास्ट 2 सेकेंड
लास्ट 2 सेकेंड से कितना एक्सेशन है, ये पार्ट एक्सेशन देता है, दैट इज रिटार्डेशन दे रहा है, नो डिसलेशन दे रहा है। तो हम लोग पहला के लिए कैसे बनाएंगे, सिंपल है, इससे लेंगे तो सिंपली है कि एक्सेलेरेशन फर्स्ट में कि एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड्स, तो एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड्स, ओके। तो इसमें कितना होगा, देखिए वेरी सिंपल, इतना कितना है 4 आया, मीन्स कि 4 माइनस 0, यहाँ 0.4 ये 0.0, 4 माइनस 0 बाई 2 माइनस 0, 4 बाई 2 मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। फिर नेक्स्ट बी में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी एक्सेलेरेशन लास्ट 2 सेकेंड्स, अब इसके लिए बी के लिए लास्ट 2 सेकेंड एक्सेलेरेशन क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे 4 0, लास्ट जो भी मेरा 0 है तो क्या लिखेंगे 0 माइनस 4 और मीन्स 6 माइनस 4, तो माइनस 4 बाई 2 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेज में पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, सेकेंड में डिसलेशन निगेटिव एक्सेलेरेशन, ओके। तो इस तरह से सोल्व करते हैं। प्लीज भैया एंड बहन, इससे रिलेटेड पीडीएफ फाइल आप लोग को भेज दिया गया है, और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग, ओके।